Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Please subscribe my YouTube channel for watching new videos on the new topics of the physics from basic to standard level. Okay, in mixed language, Hindi and English. Okay, if you are want to see videos or another topics, please comment. Okay, so today we will discuss about the special equation of motion. Okay, in previous lecture we will discussed about we have discussed about the three equations of motions and their derivations by graphical method. Okay, but there is also a special equation of motion. Okay, so what is the form of that equation? For this, see on the board, distance traveled by a uniformly accelerated object in nth second. ओके, समझने की कोशिश कीजिए। आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसने आप मोशन स्टार्ट की और आपके पास एक वॉच है, उससे आपने टाइमिंग स्टार्ट की। तो 0 से टाइम आपने काउंट करना स्टार्ट किया, मूव करेगा तो टाइम आपका इंक्रीज होगा। यदि आपसे हम ये पूछते हैं कि 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 5 सेकंड्स में मतलब होगा कि शुरू से लेकर 5 सेकंड तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, या 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई। ठीक है ना। बट nth सेकंड मींस कि 5वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मीनिंग आफ्टर द 4th सेकंड एंड बिफोर द 5th सेकंड, यानी कि 4 to 5 के टाइम इंटरवल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस हमें क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। बट हमने जो अभी तक इक्वेशंस ड्राइव की इक्वेशन ऑफ मोशंस में आपकी टोटल टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि टी टाइम में, एन टाइम में, एन सेकंड्स में, एन सेकंड में नहीं, एन सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब हम ड्राइव करेंगे ये जो आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, एस एन से डिनोट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन in nth second is Sn equals to u plus half a into 2n minus 1. Okay. Dimensionally, this equation is not correct because the distance is meter, here is the velocity in meter per second, but here is the acceleration in meter per second. Okay, so this is very important equation because here this equation dimensionally not correct. Okay, ड्राइव करते हैं प्रूफ, डेरिवेशन लिख देते हैं, डेरिवेशन। ओके, हम इसे ड्राइव करेंगे। सपोज करिए कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से मोशन स्टार्ट करता है। लेट अस कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द uniformly moving, uniformly accelerated object only along a straight line is u.
Okay, and the distance traveled by this object in n seconds is s. Is s. And the distance traveled by the moving object in n minus 1 seconds is s dash. Okay, here the time is n minus 1 second and here the time is n second. Then this difference will give rise the value of the distance traveled by the moving object in nth second, because the nth second is started from here. Okay, and in this part we can apply equation of motion, and overall this part also we can apply equation of motion. So suppose this point is A and this point is B. For motion from O to A, or motion from O to A. Okay, O to A, using second equation of motion, s equals to s dash. Okay, u into t plus half at square. Okay, put the value here. Suppose कर लीजिए यहाँ पर this is s1 and this is s2. That this is the second equation of motion. Implies that for this part of equation of motion, s1 is u t is n minus 1 plus half, acceleration is a, and time is n minus 1 to the whole square. This is equation number first. Similarly, for motion from O to B, using second equation of motion, s is ut plus half at square, and this is s2 equals to initial velocity is u, time taken is n plus half a n square, equation 2. Then the distance traveled in nth second, Sn equals to S2 minus S1. Put the value here. S2 is un plus half a n square minus un minus 1 minus half a n minus 1 to the whole square. Now simplify these terms. Un plus half a n square minus un minus minus plus u minus half, open the whole square, open minus 1, n square plus 1 minus 2n. Okay, and the term un cancel out by minus un. This u takes first term as first term, and here half a n square minus half
n square plus 1 minus 2n. Also here. Take common half a. Then we get n square minus n square and minus 1 plus 2n. Then we get Sn equals to u plus half a 2n minus 1. By the help of this equation, easily we can find out the distance traveled by a uniformly accelerated object in any second, especially in any second. Okay, so to understand this problem, we take an example based on this problem. Okay, so try to solve this equation, and this problem is, नोट कर लीजिए. And the problem is a particle having initial velocity (5 meter per second) or moves with a constant acceleration meter per second square for a time 10 seconds along a straight line. Find the displacement of the particle in the last 1 second and the total distance traveled in 10 seconds. So understand this problem. Try to understand this problem, which is very easy. If you try to solve this problem by the help of this formula directly. See, a particle having initial velocity 5 meter per second. Solution: we have initial velocity u is 5 meter per second. We take standard notation with a constant acceleration. A is 2 meter per second square.
फॉर ए टाइम 10 सेकेंड along a straight line. टोटल टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड. Find the displacement of the particle in the last 1 second. Last 1 second is 10th second. Okay. N equals to 10. Okay. N equals to 10. 10th second. Okay. And the total distance traveled in 10 second. Total displacement आपको find करना है. डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस कह दीजिए या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड एंड द टोटल डिस्टेंस. ओके, तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है. एक तो आपको निकालना है Sn S10 कैलकुलेट करना है और एक आपको टोटल कैलकुलेट करना है. सो वी नो दैट distance डिस्प्लेसमेंट ही कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम इफ द पाथ डजंट चेंज. Displacement of the moving object in last nth second is given by Sn equals to u plus half a 2n minus 1. Implies that S10 will be equals to u plus half a 2 into 10 minus 1. Put the value of u and a. U is 5 plus half, a is 2 and this is 90. 2 cancel out by 10. 2 19 plus 4, that means 24 meter. This is the answer. And total distance, for total distance we can use second equation of motion ut plus half at square, and u is 5, t is 10 plus half, a is 2 and t is 10 to the square, that is 50 plus 100, that is 150 meter. Okay, this is a problem based on the distance traveled by any object in the nth second. Okay, after that we will discuss some mathematical operations and tools which will be used in the articles in next topics of the chapters. Okay, thank you.